Hello, plus two students. I am Ruchita Sharma, lecturer in English, GSSS Bertie. Today we shall discuss how to write a short composition, that is, how to write factual description. बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है और इस भाग में हम सीखेंगे कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इवेंट या इंसिडेंट के संबंध में हम कैसे लिखें। आओ जानें कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इज अ राइटिंग टास्क दैट डिस्क्राइब्स अ प्लेस, अ पर्सन, अ प्रोसेस or an event or an incident in a matter of fact way. तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के द्वारा हम पाठक के दिमाग में, मन में एक इमेज क्रिएट करते हैं किसी इवेंट या इंसिडेंट के बारे में। इस तरह से हम रीडर को इनेबल कर देते हैं कि वो ग्रास्प कर ले उस इवेंट या इंसिडेंट की डिटेल्स। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के द्वारा हमने फोकस करना है कि हम उस इमेज को कितनी एक्यूरेसी से डिस्क्राइब करें। So, besides creating an actual image of the incident or the event that took place, our main purpose is to inform the reader about how horrible or magnificent the incident or the event you want to describe was or is or will be. So for this matter, we have to make use of the proper tense. अगर हम अतीत में लिख रहे हैं तो past tense का प्रयोग करें। For example, आपने अगर अपने स्कूल में आयोजित एनुअल फंक्शन के बारे में डिटेल देनी है इस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के द्वारा, तो आप पास्ट टेंस में लिखेंगे अगर वो एनुअल फंक्शन हो चुका है। Secondly, make use of active verbs so that your description is more lively and engaging. Use adverbs to describe actions. Next point, use adjectives to describe nouns like beautiful setting, timely reception, great applause, cheerful children. Next point to remember is to use proper connectives to connect sentences in your factual description paragraphs. For example, use connectives like first of all, next, then, while, finally, at last, and so on. Next point to ponder is follow a proper sequence. अगर आप स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं तो जैसे जैसे वो इवेंट हुआ उसकी सीक्वेंस किस प्रकार से थी, उसी तरह से आप उसे इस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, कैसे रिसेप्शन हुई, चीफ गेस्ट आए, सिंगिंग, डांसिंग, बाकी विविध प्रोग्राम्स हुए, चीफ गेस्ट की स्पीच, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन
and thanks speech by the principal, and the closing. This is the proper sequence. आओ बच्चों जाने कि जब हमने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल डे हेल्ड इन GSS Berthi. Next, you will move on to the first part of the factual description, and that will be the first paragraph, which you will call introduction. तो introduction में topical sentence होगा और इसमें आप टॉपिक के बारे में बताएंगे, जैसे कि जो टाइटल है आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की, उसको एक 2 या 3 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करें। जैसे एनुअल डे ऑफ GSS Berthi was held on 30th December 2019. The function was held in the school auditorium with great pomp and show. तो ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हुई। उसके बाद फॉर्मेट में हम दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्टिव डिटेल लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव डिटेल में हम टॉपिकल जो सेंटेंस है उसको कुछ आइडियाज के साथ सपोर्ट करेंगे और रीजंस देंगे। सो विल सपोर्ट द टॉपिकल सेंटेंस बाय गिविंग रीजंस, एंड दिस पार्ट of your factual description has the most number of words. It may be written in one paragraph or another paragraph, more than one paragraph. Here you will describe in detail what happened during the event, what happened during the annual function. Singing, dancing, speech, thanks, distribution of prizes, and all of it in a proper sequence. The third part will be additional information. अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मेक श्योर टू कीप इट कंसाइज। इसको शॉर्ट ही रखें, इसका ध्यान दें। एडिशनली कोई और अच्छा कार्य हुआ हो आपके एनुअल फंक्शन के दौरान, जैसे कि कोई पौधारोपण, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं फॉर्मेट में लास्ट पॉइंट पे, जिसको कहते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो कंक्लूडिंग में ये क्लोजिंग लाइंस हैं, इसमें ये इट विल राउंड ऑफ by repeating the idea you have given in the first paragraph, or whichever were your topical sentences that you will repeat here, but by writing it down in a new way. तो यहाँ पर आपने जो टॉपिकल पैराग्राफ या जो फर्स्ट पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो भी लिखा है वही बातें अब आप दोबारा दोहरा सकते हैं और उनको दूसरे ढंग से, नए अंदाज में, और वो हो गया आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ या कंक्लूजन। For example, our annual function concluded on a high-spirited note
Everybody returned home excitedly and in a very cheerful way. In short, we can say that the concluding paragraph is a summary of the previous paragraphs. So, students, you have to keep in mind whenever you write a factual paragraph that the event you are writing about, you should be very clear about when did the event occur. And in the factual detail, you have to write down these facts. For example, if you are writing about, again, I'll give you the example of annual function. If you are writing about the annual function, you have to mention the date and the venue. And further on, in the details, you have to write the sequence of the activities which happened during the annual function. For example, the arrival of the chief guest, the reception he had, his being honored by the principal, teachers, and the students, the variety programs, singing, dancing, speech by the chief guest, prize distribution, thank you speech by the principal. So keep in mind the usage you will be making of the correct tense. So if the event has already taken place and you're reporting about the event later, then you will use the past tense. So after that, give additional information, if any, about the participants, and when you come to the closing, write about the results of the incident or the event the annual function had on the audience. Was the audience cheerful, happy, satisfied? And then round it off by repeating the ideas you had given in the topical paragraph or the introductory paragraph, but in a new way. So in this way, we will be having our full grasp over the format. So we'll know what is contained in the introduction, which is the first part of factual description, and the second part, which is the body of the factual description and which includes the descriptive details. These are the ideas which support the topical sentence. And here you describe in detail about what happened. तो आप यहाँ पे आपने जो विटनेस किया, आंखों देखी, वो आप सारा रिपोर्ट करेंगे. जो आपने विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया, वो सब को दर्शाने का फ्रीडम आपको बॉडी में मिलता है. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के सेकंड पार्ट में आपको लिबर्टी है कि आप डिटेल में वो सब कुछ लिखें. और फिर उसके बाद कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है तो वो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में 1-2 लाइंस में आप दे सकते हैं, पर ध्यान रखें कि गिवन जो आपको वर्ड्स हैं 125 एंड मोर, 150 एंड मोर, उसके अंदर ही वो डिस्क्रिप्शन हो. And last part of the format, I will repeat, is the concluding detail. That is the conclusion. Right. So it is a summary of the whole of the introduction, body, and the additional information you have given. So it can be in 2-3 lines, and be exact about the
word limit. अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी एक अच्छा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने के बारे में. While writing a good factual description, students, you must show an eye for detail. Next, you must have a power of observation. Be objective. Be logical and systematic. There should be unity in the paragraph so that you frame and build up the paragraph logically. There should be a proper thought process throughout the paragraph. The whole paragraph should show that you are moving around a single controlling idea. अब फॉर एग्जाम्पल आपका पैराग्राफ एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल के बारे में है, तो एनुअल फंक्शन पूरे पैराग्राफ का एक एपिसेंटर बने रहना चाहिए. उसके बाद बच्चों जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है गुड वोकैबुलरी. तो आपने ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर वर्ड आपने जब यूज़ किया है उसका बार बार प्रयोग अगर करना पड़ रहा है तो आपके पास सिनोनिम्स हों, उस वर्ड के लिए बहुत सारे और वर्ड्स हों, तो अपनी वोकैबुलरी मजबूत करनी है. बच्चों अगर फॉर एग्जाम्पल आपने गुड जो वर्ड है इट्स अ सिंपल वर्ड, अगर आपने गुड का इस्तेमाल बार बार करना है तो 4-5 बार करना है तो आपके पास गुड के लिए सिनोनिम्स होने चाहिए. यू शुड हैव other words instead of good because you have to use it again and again. But अगर good ही बार बार बोलेंगे तो your marks, your score will go down. It will not have a good impact on the examiner. तो गुड के बजाय बेनिफिशियल, प्रॉपर, इफेक्टिव, एडवांटेजियस, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल इस प्रकार के वर्ड्स आपके पास होने चाहिए. तो अपनी वोकैबुलरी हमें स्ट्रांग बनानी है. एक रजिस्टर वर्ड रजिस्टर आपने मेंटेन करना है. तो जैसे एनुअल फंक्शन है तो उसमें जो टर्म्स वर्ड वोकैबुलरी आ रहे हैं आ सकते हैं उनको नोट डाउन करें. अलग अलग पेजेस में अलग अलग तरह के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस इवेंट्स के में जो प्रयोग में आ सकते हैं शब्द उनका आप एक रिकॉर्ड बना लें with the help of your dictionary and whichever paragraphs you have read and with the help and support of your teacher. You can do this effectively. And finally, check for grammar, punctuation and spelling. Dear students, when you are given a topic, do not just start writing. जब भी आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है एकदम से शुरू ना कर दें लिखना. Just wait and think about the given topic you have been asked to write and जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको पॉइंट्स में साइड में लिख लें in the rough space and after that develop upon those ideas. Now students, let's listen to an example of a factual description. The topic is visit to a village. While listening, keep in mind the different parts of the format of writing a factual description. That is introduction, descriptive detail, and conclusion. So here we begin. Visit to a village. Last Sunday, I went to visit my friend Anil at his village Gopipur. It was an hour's drive from my place. My friend was at the village bus stop to receive me,
At his home, his parents welcomed me with big smiles and warm hugs. I was served a hearty rustic meal of local dishes like makki ki roti, saag, kadi, makhan, lassi, ghee, and shakkar. It was so relishing. Later, we set off for a walk around the village. We visited an ancient Shiva temple, a big pond, maize fields, and a pine wood, where we sighted monkeys, deer, and peacocks. We also played a cricket match with Anil's squad. It was very exhilarating. In between, we took pictures of the beautiful landscape. My friend told me that during Baisakhi, a grand fair is held near the temple. Wrestling bouts were also held. Till late evening, I relaxed in the fresh air, unpolluted environs, and lush green arena. Now the time came for us to say goodbyes, as I had to catch the last bus to the town. We embraced with promises to meet soon. Surely my visit to Gopipur had become a memorable event, imbibed deeply and lovingly in my heart and soul. तो बच्चों, इस प्रकार से आप एक विस्तृत और दिल को छू जाने वाला और एक ग्रास्पिंग और इमेज प्रोड्यूसिंग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने में कामयाब हो जाएंगे. सो कीप रीडिंग एंड लर्निंग. हैव अ गुड डे.